हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी के और एक वीडियो में। ये हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सेकंड वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड्स your various stages which are worth noting to reveal the actual pattern of development, and the following are some basic pattern of development। ये बोल रहा है कि फेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में ये बोल रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड्स वेरियस ऑफ स्टेजेस लाइक योर गेमेटोजेनेसिस, जैसे कि यहाँ पर हमने दिया है योर गेमेटोजेनेसिस, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, डिफरेंशिएशन। तो it means it says that not your development is one phase stages, it consists of many stages। ठीक है, डिफरेंट स्टेज के बाद एक ह्यूमन का एक डेवलपमेंट होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर गेमेटोजेनेसिस, गेमेट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद लास्ट में आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होकर एक इसको बोलते हैं कि एक मैच्योरनेस, ह्यूमन का एक डेवलप्ड फॉर्म आता है। तो चलिए हम बारी बारी करके स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। पहला है आपका गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस के बारे में समझेंगे। गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस of formation of gamete, that is sperm and ovum, in male and female respectively। It is the formation of germ cell, that is your gamete। In male it is called the sperm and female it is called ovum। Gametogenesis is a process which found in both in male and female। In male the gametogenesis is called your spermatogenesis, where sperm is produced, but in female it is called your oogenesis, where ovum is produced। ठीक है, और ये टू सेपरेटली डिफरेंट सेक्स के आधार पर ये होता है, लिंग के आधार पर ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर, यानी मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होता है और फीमेल में your ovum। but in case of fertilization, okay, it should be very much important your in fertilization, in case of fertilization it is only happen in your female body। ठीक है, so fertilization क्या बोल रहा है कि fertilization is the phenomena of fusion of ovum and sperm to form zygote। it is a single diploid cell। during fertilization only nucleus will enter into the ovum। ठीक है, fertilization is a phenomenon where fusion of both ovum and sperm occurred in female body, not in male body। ठीक है, to form zygote, ये zygote फॉर्म करता है and the zygote is a single diploid cell, because we know that your gamete is a haploid cell where only half of your chromosome, n number of chromosome, it means 23 numbers of chromosome will be there, but in zygote form the zygote which is a diploid cell। during fertilization only nucleus will enter into the ovum। ओके, ठीक है, तो जब ये आपका सपोज आपका ये ओवम है एंड इट इज़ योर स्पर्म, जब ये अप्रोच करता है ओवम के तरफ, ये स्पर्म है, स्पर्म ये अप्रोच करता है, तब जब ये मेनली कॉन्टैक्ट करता है इसका मेम्ब्रेन के साथ, उसके बाद डिफ्यूज़ होकर ये सिर्फ इसका न्यूक्लियस छोड़ देता है अंदर। ठीक है, आफ्टर डिफ्यूज इट विल रिलीज इट्स न्यूक्लियस and here its tail parts will be diffused here outside the ovum membrane। ठीक है, okay, then fine। after that another phase is came, it is called cleavage। after zygote formation it will proceed for the cleavage। cleavage means your division also। it is the first and foremost role of zygote to divide। ठीक है, cleavage is very important, where it is the first and foremost role of zygote to divide, as a result of which lots of new cells
फॉर्म, सो इंक्रीज इन सेल नंबर टेक प्लेस। ठीक है, क्लीवेज होने के बाद जाइगोट डिवाइड करता है और मेनी सेल्स प्रोड्यूस करता है, वेयर वन जाइगोट फॉर्म मेनी सेल्स and by the process of cleavage. ठीक है, and then occur your another phase is called blastulation. ब्लास्टुलेशन आता है उसके बाद, क्लीवेज के बाद। ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन द मास ऑफ सेल फॉर्म ए होलो बॉल। एक होलो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बॉल लाइक होलो स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। एंड इट हैज़ द डिफरेंट लेयर ऑल्सो, it has a layer and a inner cell is called differentiation. Okay, after blastulation, after forming a hollow structure, it proceeds for differentiation. In the process of differentiation, cell get differentiated. Okay, cell get differentiated and it forms the cavities. The inner cell layer is called inner cell mass. एक इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, जाइगोट डिवाइड क्लीवेज हो गया, उसके बाद ब्लास्टुला फॉर्म हो गया, एक होलो स्ट्रक्चर। ठीक है, एक होलो स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद एक साइड पर यह आपका सेल क्लम्प होकर रह जाता है। ठीक है, ऊपर स्ट्रक्चर ये हमारा, इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, आउटर कवरिंग, एंड इन वन साइड, in one person it is filled with the number of cells and it is called inner cell mass. Okay, so it is says that the inner cell layer is called inner cell mass and outside cell layer is called ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, द इनर सेल मास डेवलप्ड इनटू 3 जर्म लेयर। जितने भी इसका इनर सेल मास है वो डेवलप होकर 3 जर्म लेयर प्रोड्यूस करता है। एंड द आउटर ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्स प्लासेंटा। उसका जो आउटर कवरिंग ट्रोफोब्लास्ट का होता है, ब्लास्टुला का, इफ it is a blastula in outer cell form your placenta. It form placenta and the inner cell mass will form 3 germ layer. Okay, the outer cell will produce your placenta and the inner cell mass produce 3 germ layer, among which the name are your 3 germ layer. One is your outer side is called your ectoderm. ठीक है, ectoderm, and middle is your mesoderm, and inside the layer which is present inside is called endoderm. And this germ layer produce different types of tissues. There is this germ layer having different characteristics and different from each other and having different types of nature, so they form different tissue systems. Okay, then coming your organogenesis. The name suggests that the organogenesis, organ means your it is हम इसको कहते हैं अंग। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, प्रोडक्शन को जेनेसिस कहते हैं। तो ऑर्गेनोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, ये बोल रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट वाइटल ऑर्गन, ओके, विथ एसेंशियल ऑर्गन फ्रॉम द डिफरेंट जर्मिनल लेयर्स। मैंने जैसे बोला था पहले स्लाइड में कि डिफरेंट जर्म लेयर है, उनमें से डिफरेंट टिश्यू सिस्टम डेवलप होता है, उसके बाद ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। तो एवरी जर्म लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप formation of different type of tissue and tissue systems and organ also. So ectoderm produce its own nature of organ which is different from endoderm and mesoderm and vice versa. तो ये बोल रहा है कि डिफरेंट जर्म लेयर डिफरेंट ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा और अपने करेक्टरिस्टिक्स एंड अपने नेचर के हिसाब से वो अपने अपने ऑर्गन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंट प्री डिटरमाइंड ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट जर्म लेयर। इट इज कॉल्ड प्री डिटरमाइंड ऑर्गन बिकॉज एवरीथिंग इज डिटरमाइंड
before the formation of the organ, because in gene different germ layer having the different types of genes and different your nature and characteristics. Therefore it is already determined which germ layer will produce which type of tissue. इसका मतलब यही है, ठीक है. Okay, then it is your metamorphosis. Okay, and generally it is found in your invertebrates. Okay, in generally found in lower grade animals. Okay, mostly found in invertebrates. It makes the animal more efficient to adapt with environment, and process is called metamorphosis. Generally metamorphosis also help in to adapt with your environmental condition. ठीक है, जैसे कि invertebrates हो गए. Metamorphosis generally it is coming from the Greek word metamorphosis, and it is metamorphic. It is called as your change of form. Okay, change of form it is called. Therefore it is in Greek it is metamorphosis in the sense change of form. So yes, generally your lower grade of animal in यानी invertebrates में पाया जाता है, like your amphibians. They have the two form. Okay, one is your larval form, then your mature form. ठीक है, therefore it is found in their cases only. It is also help in adapt with your environment. Metamorphosis help in adaptation with environmental condition. Metamorphosis is the process of formation of adult organism from sexually and physiologically immature organism. जब लार्वा होता है तो it is very much small and your fish like. Okay, fish like structure, then and then it becomes your mature form. Earlier it will unable to reproduce, or physiologically it is not more efficient to sustain in environment. To become survival, to have their survival, they transform yani morph their self to become sexually and physiologically mature. ठीक है, then it is then your differentiation and growth. Okay, first of all, by taking the process of differentiation, into consideration, we can explain it as a process of diversification of single cell into numerous cell types. Differentiation means diversification of one single cell to many types of cells. यानी हम एक so India is a diversified country. It means हम सभी तो रहते हैं इंडिया में, लेकिन इन लोकेशन के बेसिस पर डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है. इसको हम डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं. अगर हम एक सेल को, इंडिया को एक सेल समझे, तो इन डिफरेंट रीजन वी हैव different culture, different language, different food practices. Like that, if one cell produce different types of cells and determined to produce different type of tissue, then it is called your differentiation. Okay, ठीक है, यहाँ लिखा है a single cell zygote can divide and then form numerous cell like neurons, muscle cell, bone cell, blood cell, etc. in the process of differentiation. It means एक ही सेल जब फर्टिलाइजेशन होता है, एक ही सेल रहता है योर जाइगोट, उसके बाद वो क्लीवेज होकर माइटोसिस होकर ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है. फ्रॉम योर वन जाइगोट सेल इट प्रोड्यूस न्यूमरस सेल टाइप्स, दैट इज योर न्यूरन सेल्स, दैट इज योर मसल सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, एक्सेट्रा. ठीक है, by the process called differentiation. It is the characteristics of zygote that it divide to form different types of cells in the process of differentiation. It is a property of zygote. Okay, and then this follows a complex phenomenon. To produce such cells, genetic factor play a vital role in differentiation process. ये बोल रहा है कि जेनेटिक फैक्टर जो कि जाइगोट के अंदर है, इन जीन्स, they have the potentiality to form different types of cell. They have the information in their
in chromosome they have the information of protein, information of that particular produce different types of cells from one zygote. And your differentiation is your irreversible process. It not become reversible. एक बार हो गया तो ये नहीं कि पीछे बैकवर्ड ये प्रोसीड करेगा, ऐसा नहीं है. डिफरेंशिएशन इज ए irreversible process. It is only going forward, not backward. The differentiation leads to assigning a particular works for a particular cell type. In differentiation, what will happen? There will be division of labor also coming into the picture. Okay, particular forms of particular cell type. By the process of differentiation, specificity will be arises and increase in shape and size of the cell from the tissue and ultimately organ. In differentiation क्या होता है? आपका जाइगोट क्या फॉर्मेशन करता है? सेल के बाद एक यूनिक टाइप ऑफ सेल्स. इट मीन्स सेम टाइप ऑफ सेल हैविंग सेम स्ट्रक्चर, shape and size and nature, they will form one tissue. Another type same size of cell, having their structure same, having shape same, having your nature same, they will form another tissue. So from one zygote, by the process of differentiation, different cell will produce and different tissue will produce, and ultimately the organ will produce. And it is because of the process of growth, and ultimately by the process of organogenesis or organ formation, we can found a developed individual. Okay, and it also help in your growth and development. That every specific function thought to be happen only when organ function is carried out, and that organ should growth at its particular shape and size to carry out a particular work. ठीक है, तो ये इसका मीनिंग ये है कि इट मीन्स नॉट दैट आपका एक ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया, इट डज नॉट मीन दैट इट विल वर्क प्रॉपरली. इट शुड हैविंग द प्रॉपर साइज एंड शेप ऑल्सो. यानी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले सकते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है. ओके, बर्थ होने के बाद वो चल फिर नहीं सकता. In the meantime they cannot do any physical work. ठीक है, any physical वर्क वो कर नहीं सकता कि जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही चलना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता. यस, वी it is required some time to strengthen his body, his leg or her leg or her hand to fully functional. Okay, it should therefore it is written in this line that organ should growth at its particular shape and size to carry out particular work. अगर ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया, नो डाउट ऑर्गन इज फॉर्म्ड. आपका लेग फॉर्म हो गया, हेड फॉर्म हो गया, माउथ फॉर्म हो गया, हैंड फॉर्म हो गया, लेकिन नॉट फंक्शन प्रॉपरली टिल द स्ट्रेंथ लेवल, टिल द मैच्योरेशन लेवल कम. ठीक है, आने के बाद ही ये प्रॉपर फंक्शन करना शुरू करता है. उसका एक टाइम होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, उसके हड्डियों में, उसके मांसपेशियों में ताकत आने लगेगा. उसके बाद ही धीरे धीरे वो ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन करेगा. It means it does not mean that by the formation of a complete organ it act simultaneously. It act start from the birth only. ये हो नहीं सकता. इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है. उसके बाद फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन होने के बाद कुछ टाइम के बाद मैच्योरेशन आने के बाद उसका सही शेप और सही साइज में ग्रो होने के बाद ही वो काम करता है. ठीक है, like that. So growth is a essential in addition to differentiation. इसके लिए differentiation के साथ growth is necessary. Okay, एक बच्चा नहीं है कि जन्म हो गया तो वो बोलना सीख जाएगा, ऐसा नहीं है. उसके बाद प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, ब्रेन का ग्रोथ चाहिए, उसका डेवलपमेंट चाहिए, बहुत सारे कंडीशन है ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद भी. ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद भी ग्रोथ इज़ नेसेसरी टू function a organ properly. Okay, and that much is there. So आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में. ओके, बाय.